मेरे को ये लगता था कि इफ यू डू मल्टीपल टेस्ट सीरीज, मल्टीपल करंट अफेयर कोचिंग, देन योर नॉलेज विल बिकम वेरी ब्रॉड, बहुत पढ़ लोगे, एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इनिशियली मैं इस पॉलिसी में रहता था। देन आई रियलाइज कि मैं कितना भी पढ़ लूं, आई कैनॉट बीट यूपीएससी इन नॉलेज। यूपीएससी विल ऑलवेज स्टे अहेड ऑफ मी। ट्राई टू अंडरस्टैंड यूपीएससी, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो फ्रॉम वेयर दे आर पिकिंग अप द क्वेश्चंस, what topics are important, how examiner thinks in exam. So you try to understand UPSC, and once you have tried to understand UPSC, then you can do better than other students. All right, guys, let's start. I am Zishan Hashmi, Prelims Program Head at Civils Daily, and today I have with me Priyanshu Shekhar Jha. He has cracked the UPSC CSC examination 2022, and there is a very particular reason why we have Priyanshu today with us. Let me tell the very obvious reason, जो सबको पता है. Prelims tough होते जा रही है. Prelims has become much trickier compared to what it used to be 3 or 4 years back. Now this is something very obvious, सबको पता है. Solution क्या है? Solution is also very obvious, ये भी सबको पता है. PYQs फॉलो करना है, पास ईयर पेपर्स रेफर करना है, एंड वी नीड टू यूज पास ईयर पेपर्स एज आर गाइडिंग सोर्स, एज आर बाइबल. ये भी सबको पता है, क्वाइट ऑब्वियस. लेकिन हाउ डू वी एग्जैक्टली यूज पास्ट ईयर पेपर्स और PYQs in order to maximize our scores in the prelim paper? Exactly किस तरह से यूज करें PYQs so that we can clear the prelims paper with a comfortable margin? यहां पर गड़बड़ हो जाती है. क्या करना है ये तो पता है, exactly कैसे करना है वो आज हम यहां पर समझेंगे. Guys, as I can see here, many of the students who have joined this webinar are from my last year's Dominate Prelims initiative. और कुछ लोग मैं देख पा रहा हूं, those are part of my 2024 Dominate Prelims initiative. But apart from those, there are many new names and new faces I can see. But I'm sure जो नए लोग, नए स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, आप लोगों में से भी कई लोगों ने मेरे वीडियोस यूट्यूब पर देख रखे हैं जो फ्री वीडियोस हैं. Like I keep on speaking with respect to how do we use PYQs, how we do PYQ anchoring, and how we practically increase our score by using PYQs. This is already there. लेकिन वो मेरा पर्सपेक्टिव है. Just to give you a very simplistic example, if you have the opportunity to speak to both Dronacharya and Arjun, आर्ट ऑफ वॉर के ऊपर आप द्रोणाचार्य से कुछ पूछोगे, देन द्रोणाचार्य विल टेल एवरीथिंग फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस, हाउ ही टॉट war, art of war to his students. But when you ask the same thing to Arjun, Arjun will also say the same things, but from a different perspective as to how he fought those wars practically firsthand. And the learnings were originally from Dronacharya itself, but his experience was something that he himself had derived. सो मेरी बातें आपने YouTube पर काफी देख रखी हैं, और दूसरे स्टूडेंट्स जो डोमिनेट प्रीलिम्स के इनिशिएटिव के ऑलरेडी पार्ट हैं. लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं, फॉर देम वी हैव विद्यांशु. जैसे मैंने कहा, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 क्रैक किया है विद्यांशु ने. एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ विद्यांशु दैट यू मस्ट नो इन द वेरी बिगिनिंग, गाइज, विद्यांशु इज सच अ पर्सन who was not able to crack prelims in the first 3 attempts. First attempt, second attempt, third attempt, बहुत छोटे छोटे मार्जिन से prelims फेल होता गया. But then he had a huge transformation कि अगले जो 2 prelims विद्यांशु ने दिए, उसने सिर्फ क्लियर नहीं किए, he back to back cleared Indian Forest Service cutoff as well. And even this year he will be giving IFOS interview in the upcoming days. So ऐसा क्या क्रैक कर लिया विद्यांशु ने कि फर्स्ट ही वाज फेलिंग इन प्रीलिम्स बाय स्मॉल मार्जिन्स, बट नाउ ही इज गेटिंग 20 to 25 मार्क्स बियॉन्ड द कट ऑफ कंसिस्टेंटली. ऐसा नहीं कि एक बार मिल गया, कंसिस्टेंटली स्कोर कर रहा है. सो इन टुडेज सेशन we'll learn what are the structured methods, what are the personal methods that Vidyanshu has developed
with respect to paper solving approach. That is number one. Number two, we'll be going through Vidyanshu's notes. Those notes are also a rich source of condensed wisdom. Why do I say this? Guys, even Vidyanshu's notes are derived completely from PYQs. ऐसा नहीं है कि 10 किताबें उठा ली एक सब्जेक्ट के लिए और उनके नोट्स बनाया जा रहा है बंदा. नो, 90 to 100 पेज का एंशिएंट का पीडीएफ है, 90 to 100 पेजेस का मिडिवल का है. Similarly, there are other notes. अभी हम will restrict ourselves to ancient and medieval only. And at the end, we'll be sharing with you these PDFs of ancient, medieval, and the paper solving approach वाला PDF that Vidyanshu has made. So, notes किस तरह से बनाना है, which are in sync with PYQs, and how do we solve the actual paper, that we'll be learning. And just to briefly reiterate, जो बंदा अपना हाथ ऑलरेडी जला चुका होता है, और विद्यांशु के केस में एक बार नहीं 3 बार, he is very well placed to share his learnings कि what are the deeper insights and what are the deeper demands of the prelims paper. So over to you, Vidyanshu. Enlighten us with respect to all the secret strategies that you have developed over the course of years. You can also share your screen, Vidyanshu. Thank you, sir. Thank you, sir. Hello, guys. Am I audible to everybody? Yeah. Okay, so I'm Vidyanshu Shekhar Jha. I have cleared UPSC Civil Service Exam 2022, and presently I am DANIX officer. My batch is presently posted as SDM of various districts in Delhi. I have been assigned East Delhi district, but since then I have taken leave to prepare further. So my batchmates are there as SDM elections. And regarding prelims, why I especially took this session was thrice in a row. I missed prelims by initially 2 marks, then 0.67 marks, and then 1 marks, 3 times in a row. And then twice in a row, I have cleared even Indian Forest Service prelims cutoff, which is, for those of you who don't know, Forest has common prelims with Civil Service, and Forest cutoff is typically 20 marks, 15 marks more than Civil Service cutoff. So both the time I have been like 20, 25 marks more than Civil Service cutoff. So I have been on both the sides, failure side as well as on the successful side, in with regard to prelims as well as with regard to this exam. So I wanted to share my insights with prelims. So I will share you my notes. My audio is not mute. Okay, here, fine. I will show you my notes. So what we have thought for the session, initially, I will show you my strategy, that what I was doing in the past, what brought me so close to the cutoff, but then I missed. Then what I did in new to clear the cutoff by good margin. So that will be our first part, my strategy. Secondly, we will move on to my art and culture notes, as the Civil Daily teams will share with you. So I will show you how I made those notes. Now someone wants to use Hindi, someone wants to speak in English. ठीक है, bilingual रखेंगे, थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश. So like initially I what all strategies helped me to come close to cutoff. फिर eventually I kept missing cutoff. So मैंने क्या strategy में change किया कि I cleared the cutoff with decent margin both the times. Then second part will be my ancient and medieval notes. I will show you कि मैंने कैसे notes बनाए, how did I consider PYQ, how many questions came directly from my notes. Those I will show. Then I will show you the most important. Let me just add one thing here, guys. There were 11 questions from ancient and medieval that directly replicated from his notes, Vidyanshu's notes. So those notes are really, really rich. We'll come to it. Yes, Vidyanshu. So I will show you my notes. Then perhaps the most important highlight of the session, 2023 prelims paper I will show you. I have decoded the entire paper, that how UPSC creates those questions, how can you brainstorm answer. See, one thing you have to understand, that you cannot beat UPSC in knowledge. Okay, there is a limit to how much you can study, but then you can do better than others in exam by trying to understand UPSC's mentality. So I'll show you 2023 paper. That is the most important highlight of the session. और फिर finally we will take question answers. तो start करते हैं. I will share my screen. Guys, please pay attention to this component of the webinar, because he'll be taking you through the journey he has went through over the years. Pehle, what he was doing and what didn't work for him. Then the changes he made, and those changes worked for him. Yes, Vidyanshu.
सर मुझे वो मिल नहीं रहा है स्क्रीन शेयर वाला ऑप्शन। नीचे नीचे होगा आइकॉन, स्क्रीन के ऊपर ही शेयर स्क्रीन वाला आइकॉन होगा। ओके, शेयर कंटेंट, फाइन। सो गाइस, कैन यू सी माय स्क्रीन? या Fine, fine. So, my approach till 2021, till the time I was failing in prelims, तो I did what everybody else does, जो है कि हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम कर लिया, एंशियंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर एवरीबडी इज नॉट दैट गुड, तो मेरा भी वही हाल था कि आई एम नॉट वेरी गुड विद दीस पार्ट्स, कहीं कहीं से इधर उधर से पढ़ा था बट नॉट वेरी गुड। पॉलिटी में एवरीबडी डज लक्ष्मीकांत, सो आई केप्ट डूइंग दिस। देन इन इकोनॉमी बेसिक नोट्स, आप कोई मृणाल सर का कर ले, कोई एनसीईआरटी कर ले, कोई कुछ कर ले, तो आई ऑल्सो हैड माई नोट्स, तो कुछ बेसिक नोट्स कर लिए, बजट इकोनॉमिक सर्वे कर लिया। ज्योग्राफी में एनसीईआरटी 9 to 12 इज गुड, सब लोग वही करते हैं, आई ऑल्सो डिड एनसीईआरटी ज्योग्राफी 9 to 12। एंड देन इन एनवायरमेंट अगेन आई हैड माई बेसिक नोट्स, तो कोई क्या बोलते हैं वो शंकर आईएएस की बुक आप पढ़ लो, देन समबडी डज दैट बाजीराम की बुक, एनीथिंग इज गुड, सो आई हैड माई बेसिक नोट्स। एंड देन one thing I used to do from in my first 3 attempts was कि I was giving mock test from multiple institute, 2 institute 4 institute का उठा के mock test लगा रहा हूँ। ये मेरा चल रहा है कि हाँ इतने mock बना लूंगा, कुछ नया सीख लूंगा, कुछ एग्जाम में कुछ क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, तो with this expectation that some questions will tally from the exam, I was doing multiple tests. And again, I was doing current affairs magazine from multiple institutes. अगेन आई हैड दिस एक्सपेक्टेशन कि ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, सब पढ़ लोगे तो एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन बन जाएंगे, तो ये सब मैं कर रहा था। एंड फाइनली आई वाज डूइंग दिस थिंग कि मैं अटेम्प्ट बढ़ाने 85 क्यों करना है, 90 अटेम्प्ट करके आओ, 91 अटेम्प्ट करके आओ, तो दिस वाज द थिंग कि मतलब आपको मुझे सोर्स भी बताना था, बट ऑल सोर्सेज आई रेफर्ड, सो हियर आर द सोर्सेज दैट आई डिड, इट इज ऑन द स्क्रीन, बिकॉज यूजुअली पीपल आस्क कि व्हाट ऑल सोर्सेज यू रेफर्ड, सो these were general sources, and I did this multiple institute mock test, multiple current affairs magazine, so these were things, and these things are good enough. I was very close to cut off every time, like I told you, 2 marks, 0.67 and 1 mark, so thrice I missed narrowly, so these things are good enough, but these things are not still something was lacking. So again, coming to the outcome, what happened with this kind of preparation, in 2018 I missed by 2 marks. General cutoff was 98, I had 96. Then in 2019 I did not appear, I had changed my optional, so I needed time to prepare. And in 2020 I missed by 0.67 marks, so cutoff was 92.5, I had 91.5, cutoff was 92.8. And again in 2021 I missed by 1 marks. So when this thing happened for 3 attempts in a row, I had good knowledge, I was studying everything, then more than this feeling bad after failing prelims, more than that I was feeling helpless कि अब इससे ज्यादा क्या पढ़ ले यार, इतने साल से सारे बुक तो पढ़ ही लिए, इतने सारे मॉक टेस्ट लगा लिए, इतने सारे करंट अफेयर कर लिए, व्हाट मोर कैन आई डू? सो देयर वाज दिस फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस कि व्हाट मोर कैन आई डू एनीवे। तो then is the things that I changed that helped me clear both the exams, both time by decent margin. So now we are coming to the next part, ki what changes I made to my preparation. So I think up to here you should be clear ki what are the general sources. Everybody studies same sources, don't think that toppers have some other very unique sources, everybody does the same thing. So I have been doing same thing, but for 2022 and 23 onwards I made some tweaks to my preparation, so that we will discuss now. So these are the changes. Both the times I cleared by decent margin, 20-25 marks cutoff, above cutoff. So I understood this thing that there is no point in running after current affairs magazine of multiple coachings, and there is no point in running after test series of multiple coachings, because मेरे को ये लगता था कि if you do multiple test series, multiple current affair coaching, then your knowledge will become very broad, बहुत पढ़ लोगे, एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन बन जाएंगे, तो इनिशियली मैं इस पॉलिसी में रहता था। देन आई रियलाइज्ड कि मैं कितना भी पढ़ लूं, आई कैन नॉट बीट यूपीएससी इन knowledge, UPSC will always stay ahead of me, so you cannot do this thing. So what you have to do is do limited things, do them again and again, and try to understand UPSC, try to understand ki wo from where they are picking up the questions, what topics are important,
how examiner thinks in exam. So you try to understand UPSC, and once you have tried to understand UPSC, then you can do better than other students. Exam में बस इतना ही होगा कि you can do better than others. You cannot beat UPSC, but you can do better than others. So first thing I will say कि I remained very calm in the exam. So up to 2021 I was failing to clear prelims. Then जब 2022 का prelims आया, तो in that exam I was very calm कि ठीक है, जब इतने साल से फेल हो रहे हैं, तो I was on the verge of giving up that year कि अब और नहीं करना. So on that day I was like, ठीक है, I have been studying for so many years, life has been very miserable. Now today is my last day of suffering. So on the day of 2022 prelims, I went without any expectation. I was very calm. And when the paper began, I could not solve first 5 questions in a row. And when I could not solve first 5 questions, I only told myself that if after so much of effort, so much of knowledge, if I don't know these 5 questions, then I'm sure ki even other people won't know these questions. So I remained calm. I did not panic. And then the game changed in such a way that from question number 6 to question number 42, total 36 question, I could attempt 34, and out of those 34, 32 were correct. So I got 64, 65 marks there itself, and cutoff was 88 that year. So don't panic. Even 2023 question paper was very tough. You know, they asked this question, if you have seen the question paper, how many pairs are correct, 1 pair, 2 pairs. So it was very difficult for everybody. But I just told myself that if the paper is difficult, it is difficult for everybody. So there is no need to panic. Remain calm. Don't play on your strength, or don't do anything very extra. Remain as you have been attempting. और फिर मेरा हो गया. So don't panic. This is the first thing I will tell you. क्योंकि यू नो वेरी ऑफन पीपल से कि हमें तो वो एग्जाम घर में आके तो बनाया, तो सारे क्वेश्चन बन रहे थे, इन द एग्जाम ऑल वी विल स्ट्रगलिंग. सो द थिंग इज कामनेस. सो डोंट पैनिक, रिमेन काम. और नाउ वी गो टू द फर्स्ट पार्ट. So first what I did was, like I told you, okay, ancient medieval art and culture, every year UPSC will ask maybe 10 12 questions from this part, ancient medieval, and people are often very bad in this part, including me. We all have been very, this part is very difficult to master. So that is when I took up that I will study this thing properly. I made my own comprehensive notes. I will show you how questions directly came from this part, and I will also show you how it helped me. So you will also get those notes from the team, Civils Daily team. So ancient and medieval I did very thoroughly. Every year 5 to 10 questions will come from this part minimum. So इतना था कि मेरे 3-4 क्वेश्चन तो हमेशा एक्स्ट्रा सही हो जाते थे, बिकॉज आई डिड दिस पार्ट वेरी थॉरोली इन लास्ट 2 अटेम्प्ट्स. तो हिस्ट्री वाज फर्स्ट पार्ट. प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट. आप लोग नोट्स बना लो, क्योंकि जब हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे. ठीक है. सो हिस्ट्री में एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर एक ऐसा पार्ट है जो आपके कॉम्पिटिटर्स ठीक से नहीं पढ़ के आएंगे, उसके क्वेश्चन नहीं बनते. फॉर मी दिस पार्ट इज वेरी स्ट्रॉन्ग. तो यहाँ पे मैं हमेशा 4-5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना ही लेता हूँ. 10 के 10 मेरे से भी नहीं बनते, पर 4-5 तो मैं एक्स्ट्रा बना ही लेता हूँ दूसरे कैंडिडेट्स का. सेकंड थिंग, मैपिंग. सो इवन इन 2023 पेपर आई थिंक मोर देन 10 क्वेश्चंस केम इन फ्रॉम मैपिंग. तो मैपिंग को मैंने बहुत अच्छे से किया. अगेन आप लोग नोट करते जाओ ये सब. इन मैपिंग ज्योग्राफी में आपको क्या करना है, हिल्स, rivers of India. विद्यांशु, स्टूडेंट्स विल गेट दिस डॉक्यूमेंट एट द एंड. हम शेयर कर देंगे स्टूडेंट्स के साथ. Fine. You can continue in a fluid motion. So yeah, so geography में आपको hills, river, these things, and then world river, world plateau, etc. Similarly in environment you have to take note of all Ramsar sites and national park, wildlife sanctuary, tiger reserve. What I did was I made state-wise notes of all national park, wildlife sanctuary, tiger reserve in a specific state. So you should be knowing these things. In 2020, I think 4-5 questions came from National Park, Wildlife Sanctuary, and Tiger Reserve. So this is one area again where you can take advantage over other candidates. And similarly, a lot of questions are coming from places in news and international relations. So mapping in itself again was a game changer for me. I have been doing this thing very religiously every time. So mapping is the second part. Third, agriculture. From 2020 onwards, UPSC has been asking 3-4 questions every year. 2020 में तो काफी क्वेश्चन आ गए थे, और लास्ट ईयर भी 3-4 आए हैं. तो एग्रीकल्चर थोड़ा पढ़ लो कहीं से. मेरा तो ऐसा था कि मैंने फॉरेस्ट सर्विस का भी दिया, तो मैंने वहां से पढ़ा था, पर आप लोग कहीं से पढ़ लो, एग्रीकल्चर थोड़ा कर लेना. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट की द मिस्टेक आई वाज डूइंग इन पास्ट अटेम्प्ट वाज दैट आई वाज गिविंग लॉट ऑफ टेस्ट सीरीज. अब उसमें क्या हो रहा था कि बहुत सारा करने के चक्कर में आई वाज मिसिंग आउट ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. तो फॉर लास्ट 2 years आई हैव बीन डूइंग ओनली 1 टेस्ट सीरीज. उसको अच्छे से कर लेता हूँ, उसको एनालाइज कर लेता हूँ, उसके
पीछे सॉल्यूशंस को पढ़ के उसको अच्छे से समझो. दिस विल हेल्प यू इन 10-15 क्वेश्चंस. तो यहाँ से मैंने किया है कि यहाँ से भी मेरे को थोड़ा हेल्प मिल जाएगा. एंड अगेन विथ करंट अफेयर्स, लिमिट योरसेल्फ. एक मैगजीन बहुत हो गई तो दो, उससे ज्यादा नहीं. सी द थिंग इज यू कैनॉट बीट यूपीएससी इन नॉलेज. तो इवन इफ यू स्टडी 10 मैगजीन्स, यूपीएससी विल आस्क फ्रॉम समवेयर एल्स. सो देयर इज नो पॉइंट इन रनिंग आफ्टर कि ये भी पढ़ लेते हैं वो भी पढ़ लेते हैं. लिमिट योरसेल्फ. एक से दो कर लो, उनको बार बार करो. और एग्जाम में बहुत अनलाइकली है कि क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे. यूपीएससी इज ऑलवेज अहेड ऑफ ऑल ऑफ अस. तो आप दो पर भी लोगे, क्वेश्चन कहीं और से ही आएंगे. पर ये दोनों से जो आपने अच्छे से पढ़ा है ना, वो नॉलेज काम आएगी एग्जाम में. यूपीएससी में दैट नॉलेज विल हेल्प यू. सो दैट इज द थिंग. एंड देन आई रिड्यूस्ड माय नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स. तो द थिंग इज दीज डेज कट ऑफ इज अराउंड 75 marks, 80 marks. Last year it was around 88 marks. So when cutoff is like this, why would you go for तुक्केबाजी? So I don't believe in this thing of guess mastergiri. मतलब don't go for blind तुक्का कि बस attempt बढ़ाना है, so I am attempting more and more questions. My logic has been to attempt less. So as I have mentioned कि अगर आप 80 भी attempt करते हो और 55 भी correct हो गया, 25 भी wrong हो गया, still you are getting 93, which is enough to clear the exam, both this year and last year. So मैंने तो अननेसेसरी रिस्क नहीं लिया था. मेरा था कि आइदर आई नो और वेयर आई हैव एलिमिनेटेड 2 ऑप्शंस, और वेयर आई हैव सम फीलिंग कि ये होगा वहीं पे. एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि the biggest game changer for me was previous year question. So what happened in the past कि I was focused too much on too many coachings, current affairs, too many coachings test series, और उसके चक्कर में मैं previous year नहीं बना पा रहा था. और क्या हुआ कि 2022 में मैंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी इंटरव्यू दिया था. और लाइक आई टोल्ड कि फॉरेस्ट की कट ऑफ जो है वो 15-20 नंबर ऊपर जाती है सिविल सर्विस के कट ऑफ से. सो हम लोग काफी सारे फ्रेंड्स तो जो फॉरेस्ट का इंटरव्यू दे रहे थे, तो हम सब डिस्कस कर रहे थे आपस में इंटरव्यू का. तभी बीच में डिस्कशन केम अबाउट प्रीलिम्स. So all of us are giving forest interview. So all of us have cleared prelims cut off by 15-20 marks margin minimum. So the common thing when we spoke about prelims, one thing that everybody agreed was the one thing we focused most was previous year questions. This was common theme along all very of us. Very important. So for all the students who have cleared prelims with very decent margin, previous year question has played most pivotal role. तो अब क्या होगा? I have mentioned the things कि all things that you will gain. First, you keep talking about कि सर कौन सी NCERT पढ़नी चाहिए, कौन सी book पढ़नी चाहिए. So when you look at previous year question, you will realize okay from which all areas UPSC asked the question. So for example, कौन सी NCERT आएगी. So you will get to know the source. Secondly, some questions will be repeated as it is. We will discuss all these things in 2023 paper, which is third part of today's session. So I will show you there. So some questions will be repeated, not many, but 2 to 4 questions will be repeated. Now thing is ki if you cannot solve these 2 to 4 questions, you will fall behind the competition. Hence solving PYQ is very important because everybody else would be able to solve, whosoever is a serious candidate. Then the thing is people expect the same question will get repeated, but that is not the case. Very few questions get repeated. Themes get repeated. For example, in 2018 they asked about voting in president election. Again in 2023, again they asked about presidential election. The question was different, but again it was about voting pattern in president's election. So the question was different, but it was from same topic. So themes will get repeated. Someday they will ask about Ganga's tributary. Next year they will ask about Brahmaputra's tributary. So this rivers and tributary, that theme becomes important. So question as it is won't get repeated, but themes will be. And finally, with previous year questions analysis, you will understand mindset of UPSC's examiner. So this thing, as I will show you in 2023 question paper, this will help you in every other question. I cannot say 90% question, but every second question you will understand examiner's mindsets and what kind of tricks can be applied. So we will see all those things. Tricks is the next part. I will show you कि कैसा tricks है, and examiner mindset will see in the paper. So my suggestion is you start from 2023 itself and go minimum up to 2013. तो पहले ये करना है minimum. अगर आप उसके पीछे भी जा सकते हो 2013 के backward तो very good, but minimum 2013 तक करो. Solve the question, look at the wrong options कि कौन सा option, अगर बाकी 3 option wrong है तो क्यों wrong है, you should know कि why other 3 options are wrong. और if they are asking about कि से fundamental right में 14 का ये था, तो you should know completely about article number 14. इस टाइप से कि question itself is not enough, you should know everything. अगर they are asking about coniferous forest, so you should know about all kind of forest. तो comprehensive preparation करना पड़ेगा PYQ को उठा करके. And in history especially,
1995 onwards अगर आप कर सकते हो तो करो. यूपीएससी हैज दिस हैबिट ऑफ पिकिंग अप क्वेश्चंस फ्रॉम दैट टाइम पीरियड. सो अदर सब्जेक्ट में आप छोड़ सकते हो, बट इन हिस्ट्री यू शुड. सो this has been a few areas where I have worked. Now I will show you what all things I understood from PYQ. Sir, you want to say something? Vidyanshu, yeah, Vidyanshu, I Hmm. would just like to add a few things. You have mentioned few important points. I've noted it here. Yeah. Just to briefly add, say for example, you said you're following current affairs from 4 institutes. 4 इंस्टीट्यूट के मैगजीन्स फॉलो कर रहे थे. यहाँ पर मेरे दिमाग में 2023 का एक क्वेश्चन आ रहा है. जस्ट टू मेक द पॉइंट कि करंट अफेयर्स हम कितना भी प्रिपेयर कर लें, देयर विल बी अ थ्रेशोल्ड. उसके आगे करंट अफेयर्स वाला ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन हम उसको सॉल्व बेस्ड ऑन आवर नॉलेज नहीं कर पाएंगे. देन एंड देयर ही सॉल्व करना होता है. से फॉर एग्जांपल 2023 में एक क्वेश्चन आया था. इट वाज ऑन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022. वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022. शायद ही कोई ये रिपोर्ट इतना डिटेल में पढ़कर एग्जाम हॉल में गया होगा. नाउ इट वाज अ करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन. सो आई कंप्लीटली अग्री विथ यू व्हेन यू से करंट अफेयर्स के पीछे ज्यादा नहीं भागना है. एक सोर्स, कोई भी स्टैंडर्ड एक सोर्स फॉलो करना है, बिकॉज अल्टीमेटली एग्जाम हॉल में एक थ्रेशोल्ड तक ही हम सॉल्व कर पाएंगे करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन. देन यू मेड अ वेरी पावरफुल पॉइंट. विद्यांशु, आई होप आई एम ऑडिबल. Yes, sir. Yes, sir. You are. Okay, you made a very powerful point when you said, don't try to outsmart UPSC based on your knowledge. Rather, try to perform better than others based on the predictable patterns exhibited by UPSC. More or less, ये कहा तुमने. Yes, sir. Yes, sir. और here I would just add one thing. कि like why Vidyanshu is saying this. Paper setter will always have more knowledge, superior knowledge than you. Ultimately, you are a candidate. Ultimately, you are a student. Or paper setter, he has lifetime of an experience and all. So knowledge में कभी भी वो आपसे ही आगे ही होगा. But when Vidyanshu is speaking about not beating the paper setter, but beating the other students by following the predictable patterns followed by UPSC, I would say here everyone have their biases. We humans have our biases. Every institution have its biases. Say for example, we are Indians, and if hypothetically, if India goes on war with some XYZ country, we'll always favor India. Now, being an Indian, we are biased in favor of India. Similarly, be it UPSC or any other institution, there are some subtle biases of their own. पता नहीं होते हुए भी उन biases को हम साथ में लेकर चलते हैं. So, जैसे विद्यांशु ने कहा कि कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली रिपीट होते हैं, कुछ क्वेश्चंस कई सारे क्वेश्चन थीम के साथ रिपीट होते हैं. So this is nothing but that very predictable bias which is at work. Also, Vidyanshu made reference to the helplessness that he experienced in 2020. Vidyanshu. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, so back to back prelims clear नहीं हो रहा था, जबकि विद्यांशु was putting all the rigor. मतलब मॉक्स दे रहा है, कोर बुक्स, एनसीईआरटी, स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत सब पढ़ रहा है, करंट अफेयर्स अच्छे से फॉलो कर रहा है, लेकिन फिर भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा. सो ही वाज फीलिंग क्वाइट sort of depressed at that point of time. And guys, I can relate with this sense, this emotion of helplessness. Trust me, in a week at least I speak to such a student. मतलब डेली बेसिस पे मैं स्टूडेंट्स के साथ बात करता हूँ, नॉट नेसेसरीली दोज एनरोल्ड इन डोमिनेट प्रीलिम्स, लेकिन जो दूसरे स्टूडेंट्स भी हैं जो रीच आउट करते हैं, टेलीग्राम पर रीच आउट करते हैं, डेली बेसिस पर बात होती है. एंड इन अ वीक एटलीस्ट देयर इज वन स्टूडेंट, आइदर अ बॉय और अ गर्ल, who cries on the phone. Literally, students रोते हैं. And guys, the pain that the students experience and the pain in their voice is very real. And there is only one reason why these students are in such a helpless situation. Because sincerity की कोई कमी नहीं है. जितने भी स्टूडेंट्स के साथ मैं बात करता हूं, everyone is sincere. Everyone is putting the number of hours. कोई 10 घंटे पढ़ रहा है, कोई 12, कोई 14 घंटे भी पढ़ रहा है. सिंसियरिटी है, कंसिस्टेंसी है, लेकिन अल्टीमेटली कट ऑफ 1 मार्क 2 मार्क से रुक जा रहा है. सो दैट सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस कम्स
And one important reason, which Vidyanshu has also pointed out, the reason is not being able to understand the deeper demands of the prelims paper. बस हम किताबें पढ़े जा रहे हैं, लक्ष्मीकांत पढ़े जा रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़े जा रहे हैं, और पेपर हमसे एक्चुअली एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, वो एज 2 मार्क की, 4 मार्क की, 15 मार्क की एज जो हमको मिल सकती है, वो हम नहीं ले रहे हैं, जो हमको आसानी से मिल सकती थी. That is one reason. And guys, at times it also appears a bit unfair, क्योंकि स्टूडेंट्स मेहनत पूरी कर रहे होते हैं, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग कि प्रीलिम्स को अप्रोच कैसा करना है, दे कीप ऑन मिसिंग आउट. So that is one important point that I wanted to add. Apart from this, ancient और medieval के context में भी विद्यांशु ने कहा कि he used maps, and certainly history, and especially ancient and medieval history, it is full of difficult and confusing facts. And facts, अगर हम सिर्फ इस हिस्ट्री के फैक्ट्स की बात करें, पॉलिटी वगैरह की बात ना करें, क्योंकि पॉलिटी में टेबल्स वगैरह बनाकर आसानी हो जाती है, लेकिन हिस्ट्री में इट्स ऑलवेज बेटर इफ यू स्टडी इन अ मैप वाइज फॉर्मेट. मैप्स में आप उतनी डेंस इंफॉर्मेशन अगर डाल दो, इट गिव्स यू अ कॉन्टेक्स्ट. ज्योग्राफिकल लोकेशन आपको मिल जाता है, और रिलेटिव लोकेशन मिल जाता है, कौन नॉर्थ में है, कौन साउथ में है, टेन्योर उनका मिल जाता है, कि टाइम पीरियड मिल जाता है, कौन सी डायनास्टी कब थी, एंड सो ऑन. बस एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं. So just to add this thing, I completely agree with Vidyanshu, and this is the exact thing I am doing as part of the dominant prelims initiative, because that is the best way of remembering difficult and confusing facts from ancient and medieval history, even modern history. One very important point that Vidyanshu put forth is, और जब मेरी बात भी हुई थी फोन के ऊपर विद्यांशु के साथ, he said कि 11 लोगों का ग्रुप था विद्यांशु का, और 11 के 11 लोग IFOS का इंटरव्यू दे रहे थे. मतलब उन्होंने 15, 20, 25 मार्क के मार्जिन के साथ कट ऑफ क्लियर किया था. ईच एंड एवरीवन हैड द सेम स्टोरी. PYQs पर एम्फसाइज किया था, PYQs को एनालाइज किया था, PYQ एंकरिंग की थी, एंड ये समझा था कि प्रीलिम्स का पेपर असल में हमसे क्या चाह रहा है. अपार्ट फ्रॉम द डीप एकेडमिक रिगर, डीप नॉलेज वी आर अक्यूमुलेटिंग, उससे हटके प्रीलिम्स पेपर हमसे क्या चाह रहा है. उन 11 के 11 लोगों ने ये किया था जो लोग IFOS इंटरव्यू दे रहे थे. तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, because only and only PYQ analysis in a structured manner was something that helped them reach till that stage of IFOS interview and final selection. And one more thing that I would like to add, Vidyanshu also said that he doesn't go for tukkebazi, guess mastergiri, and I completely agree with Vidyanshu. But I would also add one thing here. इसके आगे हम लोग प्रीलिम्स 2023 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं. उसमें जो लिंकेजेस विद्यांशु ने बनाए हैं, those are some of those linkages might appear difficult, and they are difficult. Probably some of the students attending this session might feel कि सर ये लिंकेजेस तो थोड़े वेग लग रहे हैं, या फिर हमने तो ये लिंकेजेस कभी नहीं देखे. The difference, guys, is विद्यांशु ने काफी डीप लेवल पर PYQ एनालिसिस करने के बाद वो लिंकेजेस ड्रॉ किए हैं. आप जब हम डिस्कस करेंगे, देन यू विल हैव बेटर क्लैरिटी, एंड दैट इज समथिंग आई कीप एम्फसाइजिंग टू माय स्टूडेंट्स एज पार्ट ऑफ डोमिनेट प्रीलिम्स. अल्टीमेटली वो लिंकेजेस, PYQ एंकरिंग, दैट इज समथिंग दैट विल गिव यू एज इन द अपकमिंग एग्जाम. फाइन, Vidyanshu, we can quickly move ahead with the next item.